Okay, so hello dear students. So as you all know, today we will be starting our first chapter of the physics, kinematics, that is motion in a straight line. I am your physics mentor Naman, and I will be beginning with this chapter. So we will be dealing with 11th and 12th chapters in this live stream. So the first chapter is 11th, motion in a straight line, and to begin with, you can see when we study about motion, हम सबसे पहले इसमें स्टडी करते हैं दो वर्ड्स की, विच इज मैकेनिक्स. ओके, नाउ मैकेनिक्स इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू टू अदर वर्ड्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. सो वी विल ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशंस के मैकेनिक्स जिन दो वर्ड से मिलके बना है, विच इज काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैकेनिक्स इटसेल्फ. ठीक है, तो एज यू कैन सी द डेफिनेशन, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज. ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी बॉडी पे कुछ इफेक्ट आ रहा है किसी फोर्स का. ठीक है, तो उस इफेक्ट को स्टडी करना, या वो मोशन, या वो पर्टिकुलर बॉडी इस टाइप का मोशन क्यों शो कर रही है, उसके पीछे क्या कॉज है, कौन सा फोर्स है, उसको स्टडी करना, दैट ऑल कम्स अंडर मैकेनिक्स. सो मैकेनिक इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज. ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सपोज को रोटेट कर रही है या फिर रोलिंग कर रही है, तो which force is behind it, what is the cause, what type of force, and which type of motion it is producing. Okay, rolling, rotation, and the effect and the cause, that comes under mechanics. Now mechanics is in turn divided into kinematics and dynamics. Now we will see what do you mean by kinematics here. So as the definition goes, you can see kinematics is the branch of mechanics which analyzes the effects, that is parameters and properties of the motion. काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या एनालाइज करती है इफेक्ट को. ठीक है, कि इफ अ बॉडी शोइंग पर्टिकुलर इफेक्ट ड्यू टू सम फोर्स. ठीक है, तो उस इफेक्ट के क्या पैरामीटर्स हैं, अगर वो रोटेशन कर रही है, ठीक है, तो किस तरह का रोटेशन है ना, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड अदर थिंग्स. सो kinematics is that branch of mechanics which analyzes the effect produced by a certain type of force. ठीक है, कोई certain force किस तरह का effect produce कर रही है, and then the study and the analysis of that effect, okay, of that effect of that motion is under the simple things, just the definitions of the words कि क्या वर्ड का क्या मतलब होता है. डायनेमिक्स ऑन द अदर हैंड, डायनेमिक्स का मतलब क्या है, देखो, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच बनाया, तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट. ठीक है, किस सपोज करो कुछ फोर्स है, तो उस तरह की फोर्स का एनालिसिस करना कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज, है ना, एंड विच टाइप ऑफ मोशन इट इज प्रोड्यूसिंग. इस तरह के एनालिसिस, जो कॉज, जिसके पीछे आपको कॉज पता चले, कोई मोशन हो रहा है तो क्या कॉज है उसके पीछे, इस चीज़ों की जो स्टडी होती है वो डायनेमिक्स ब्रांच के अंदर होती है. नाउ मूविंग अहेड, here you can see, yeah, frame of reference. Now we will see what is this frame of reference. ये क्या चीज़ होती है frame of reference. There are few points written here about the frame of reference. One by one we'll go through these points, okay, and we will also understand okay, so let's start. The frame attached, I'm reading the first point. The frame attached with the observer or the point from where the measurements are taken. ये frame of reference को define करने का एक तरीका है. अलग अलग points में अलग अलग तरीके हैं. We will study one by one. The frame attached with the observer. आप किसी चीज आप किसी motion को observe कर रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हु इज एन ऑब्जर्वर. समबडी हु इज ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन. तो आप किसी मोशन को ऑब्जर्व करो तो यू विल बी ऑब्जर्वर. तो उस ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, उस वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो फ्रेम जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब द रेफरेंस पॉइंट, कहाँ से वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से देख रहा है. ठीक है, तो दैट फ्रेम अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का जो फ्रेम होता है, दैट इज डिफाइंड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अनदर पॉइंट उसने क्या बोला है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर टेकन. या तो आप ये कह लीजिए कि ऑब्जर्वर जिस जगह से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर इसी चीज़ को कहने का मतलब, दूसरा मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से किसी मोशन को मेजर किया जा रहा है कि किस तरह से किसी मोशन का एनालिसिस किया जा रहा है, तो वो पॉइंट जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मोशन और उस पॉइंट के बीच में, दैट विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
द पॉइंट फ्रॉम वेयर मेजरमेंट्स आर टेकन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। वो सेम ही बात है जो हमने ऊपर बताई। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, motion is the combined property of an object and observer and is defined with respect to an observer। अभी हम जो ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो उन्होंने बोला मोशन क्या है, वो कह रहे हैं मोशन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की। ठीक है, बिना ऑब्जर्वर के आप मोशन को या सिर्फ ठीक है ऑब्जेक्ट के बारे में पता करके आप मोशन को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू डिफाइन सर्टेन टाइप ऑफ मोशन, किसी तरह का आपको ठीक है मोशन को डिफाइन करना है, तो आपको दो चीज़ों पे मेन है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विच इज़ एक तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, जो ऑब्जेक्ट मोशन अंडरगो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग द मोशन, जो मोशन का इफेक्ट दिखा रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो उस मोशन को दूर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इन दोनों के बिना मोशन को डिफाइन करना इनकम्प्लीट है। ठीक है, और हमेशा मोशन को कैसे किसके रिस्पेक्ट में बताया जाता है, ऑब्जर्वर के, देखने वाले के नज़रिए से। ऑब्जर्वर मीन्स जो देखने वाला है, ठीक है, देखने वाले के नज़रिए से मोशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इफ सपोज करो आप कह रहे हो कि एक बॉल है ना इज रोटेटिंग इन सर्कल, ठीक है, इज रोटेटिंग इन सर्कल, तो अब वो कैसे पता चलेगा, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, दैट इज योर एनालिसिस कि वो सर्कल में रोटेट कर रही है। ठीक है, तो आपके एनालिसिस के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, तो ऑब्जर्वर के बेसिस के एनालिसिस के बेसिस पे मोशन को डिफाइन किया जाता है। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट which simply says an object is said to be in motion with respect to an observer if its position changes with respect to that observer। सिंपल इस पॉइंट का मतलब ये है, आप कैसे बोलोगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है भी या नहीं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर कैसे डिसाइड करेगा कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है भी या नहीं, वो इससे ऐसे डिसाइड कर लेगा कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर चेंज हो रही है विथ टाइम, ठीक है, समय के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन इट सिंपली मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ मोशन। ठीक है, दैट्स व्हाट द थर्ड पॉइंट इज सेइंग। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिफाइन करेंगे अभी। फॉर नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट। दिस पॉइंट बेसिकली मीन्स के अगर सपोज एक पर्सन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इट्स नॉट 100% नेसेसरी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो ही हो। ठीक है, बिकॉज मोशन इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इफ़ यू विल चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आप ऑब्जर्वर ही बदल दोगे तो आपका डेफिनेशन या फिर आपका स्टेट भी बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है तो दूसरे के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए रेस्ट में है तो दूसरे पर्सन के लिए मोशन में भी हो सकता है। इफ आई वांट टू मेक इट अ मोर सिंपल, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ समथिंग लाइक दिस। सपोज यू एंड योर डैड आर गोइंग ऑन अ कार ड्राइव। ठीक है, तो आप अपने फादर के साथ एक कार ड्राइव पे जा रहे हैं, यू आर सिटिंग on the co-passenger seat and your father is driving the car and your mother is watching you guys from the main gate of your home that you are driving away। ठीक है, आप लोग गाड़ी से जा रहे हैं, वो आपको, आपकी मदर आपको गेट से देख रही है, तो आपकी मदर के रिस्पेक्ट में वो कैसे डिफाइन करेंगी इस मोशन को, वो ये बोलेंगी दैट माई हस्बैंड एंड माई सन इज मूविंग इज गोइंग इन द कार। ओके, तो आपकी मदर के रिस्पेक्ट में तो आप दोनों चल रहे हो, आप दोनों मोशन में हो। ठीक है, उनको तो कार जाती हुई दिखेगी आगे, तो फॉर हर यू आर इन मोशन। बट विल यू से सिटिंग इनसाइड द कार दैट योर फादर इज इन मोशन, आपके फादर मोशन में है, विल यू से लाइक दैट? यू विल से नो, यू विल से योर फादर इज रेस्ट। आपको तो वो बैठे हुए दिखेंगे एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, वेदर द कार इज एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स, no matter what, your father for you will be sitting right beside you। ओके, तो आपके लिए आपके फादर परफेक्टली रेस्ट पे हैं, जबकि आपकी मदर के लिए वो किस स्टेट ऑफ मोशन में है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, ही इज नॉट इन रेस्ट। तो ये ऑब्जर्वर, आप केयरफुली ऑब्जर्व करो कि हमने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, तो हमारा डिफाइन करने का जो है शुड से मीनिंग ही बदल गया पूरा। बिकॉज for you, your father is at rest because you are sitting inside the car, your frame of reference is what, inside the car, and your mother is observing this motion from outside। Okay, she is standing at the front gate, at the main gate, so she is outside the car, her frame of reference is different। So if I change the frame of reference, मेरा definition पूरा बदल जाता है किसी मोशन को डिफाइन करने का। ठीक है, और मोशन
हो सकता है ऑब्जेक्ट मोशन में रहे भी ना, रेस्ट पे आ जाए, जैसे कि इस केस में हुआ. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से बेसिकली, दैट देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा. अलग अलग ऑब्जर्वर्स का अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएगा. ओके, so now I'll tell you what is a point object. We'll study about what is a point object. Now you can see these 1 to 3 definitions I have given over here. So all these definitions give you different aspects of a point object. Point object को define करने के लिए अलग अलग तरीके हैं ये, ठीक है. Going by the first one, you can see an object whose dimensions are neglected or ignored compared to its motion or distance traveled. दोबारा इसको ध्यान से देखिए, read with me, okay? An object whose dimensions are neglected, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो dimensions है, shape, size, dimension means the shape and size. An object whose dimensions are neglected or ignored compared to what? आप एक ऑब्जेक्ट जिसकी आप डायमेंशंस को, शेप साइज को इग्नोर कर रहे हो विद कंपेयर टू इट्स मोशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट, विल रीड ऑल द पॉइंट्स एंड देन आई विल मेक गिव यू अ समराइज्ड मीनिंग, ठीक है. इन तीनों का समराइज्ड मीनिंग आपको देंगे. सेकंड पॉइंट सेज a point object indicates a tiny object counted as a dot object to simplify the calculations. Okay, the second point says that very simple meaning कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक बिग मशीन को डिफाइन करने के बजाय आप उसकी जगह एक सिंगल डॉट ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं दैट दिस इज द होल ऑब्जेक्ट. थर्ड पॉइंट इज एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट अंडरगो द सिमिलर काइंड ऑफ मोशन. नाउ दीज 3 definitions make up a complete definition of point object. Okay, so basically a point object is any object जिसका साइज, ओके, जिसका साइज और शेप इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, विद व्हेन कंपेयर टू द डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड. सपोज करिए दैट यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ बाइक, ओके, तो नो बाइक इज अ बिग ऑब्जेक्ट, बाइक इज अ क्लियरली विजिबल ऑब्जेक्ट. बाइक एक अच्छा खासा दूर से दिखने वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. एंड अ मैन ऑल्सो 5 feet 6 feet tall man, ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट मत ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है बहुत छोटा, बट एक बाइक और उस पर एक राइड करता हुआ एक बाइकर, ठीक है, उस राइडर, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. आप कॉमनली बोलोगे क्या कि तो बहुत छोटे साइज की है तो दिख ही नहीं रहे, नहीं है ना. बाइक इज क्लियरली विजिबल, बाइक इज बिग बल्की बाइक, एंड अ 6 feet tall man is also clearly visible. But when you will say that these two are a point object, when the rider will go far away from your site of observation. Okay, suppose you are observing the biker from 2 kilometers 3 kilometers, okay, that far distance, तो उतनी दूर से जब आप देखोगे तो आपको बहुत छोटे से नजर आएंगे वो. This you have must experienced on the hilltops, ठीक है. When you are at some height, the objects which are on the floor or surface, okay, have you ever taken aeroplane ride? Then you must have experienced this, that from the aeroplane, from the flight, the lights on the earth's surface seems very small. The cars and everything seems very tiny because you are observing them from a huge distance, ठीक है. तो आप एक बाइकर को, एक बड़ी बाइक को पॉइंट ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में बोलोगे? व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, दैट इज दे हैव ट्रैवल्ड लार्ज डिस्टेंस कंपेयर टू देयर साइज. Size of a bike is what? Hardly 1 to 2 meters. Let's say size of a bike is 2.5 to 2.5 meters. Okay, but if it travels the distance of 3 kilometers, तो देखो 3 किलोमीटर के सामने 2.5 meters is very small measurement. So in that case, you will call them point object. Okay, when you are observing the motion from a very long distance compared to the size of the object. ठीक है, एक इस पहला केस जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो. दूसरा केस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो वो बता रहे हैं सिंपली, जैसे कि इफ यू आर डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स मशीन, ओके, सो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग और drawing that machine as a whole to explain its type of motion, you can simply say put a dot instead of it. जैसे कि सपोज करो एक पूरी बड़ी सी कार है, ठीक है. अब मैं कार का मोशन बताने के लिए पूरी कार ड्रॉ करने के बजाय सिंपली पुट अ डॉट एंड आई विल से assume that this is a
car. Okay, so second and third point are interconnected. Why? Because when I'm riding a car, when I'm driving a car, all the parts which are inside the car, all the persons which are inside the car, and all the objects which are inside the car undergo the similar kind of motion. They both are traveling in the same direction. They all are traveling in the same direction with the same speed. ठीक है, सब हर एक चीज अंदर कार की रखी हुई हर ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स सेम है, उनकी स्पीड सेम है, ठीक है, उनका डायरेक्शन सेम है, एंड एवरीथिंग लाइक दैट इज सेम. तो वो सिमिलर काइंड ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं. तो एक बिग ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हुए सारे स्मॉल पार्टिकल्स, दे ऑल अंडरगो द सिमिलर काइंड ऑफ मोशन which compared to the big particle which they are inside in. Okay, तो इसको आप इंटरलिंक करके कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ टाइनी. अब मैं बड़ा कार बनाने के बजाय एक सिंपल डॉट बोल दूँ, वो डॉट भी वो पर्पस सॉल्व कर देगा मेरा, सिंपल डॉट लगाने. बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज a list of objects which are traveling in similar kind of motion. ठीक है, अब मैं उसकी लाइक कार बनाऊँ पूरा, उस it's a very complex process. Instead, I will put a simply put a dot and I will say assume that this is a car and the objects and the passengers sitting inside it and they are traveling in this direction at this speed. Very simple. Because आपने क्या किया, आपने अपना वर्क एफर्ट काफ़ी रिड्यूस कर दिया. Okay. And the reason, what was the reason for doing this? Because all of them were undergoing the similar kind of motion. तो हम उतना क्यों define करेंगे? We will simply say that assume this dot is car, okay, and treat is as a point object, and we can define then everything, all the equations and everything we can apply on it, and it will not change anything. तो ये दो तरीके हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के. ये बेसिकली मतलब होते हैं, या इन कंडीशंस में आप बोलते हो कि या द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो हमने डिस्कस करी. जस्ट टू मेक यू समराइज, about frame of reference and point object. Suppose this is a graph. Okay, this is an x-axis, this is a y-axis. Okay, and we have some scale here, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. And similarly here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And now I'll tell you how do you, if I place an object somewhere here. Now what will you say? What is the position of this object? You will simply draw these two perpendicular lines, and you will say that this object A is kept at 3, 3. What is 3, 3? These three is from x-axis and the second 3 is from the y-axis. Okay, now you are defining the position of this object A with respect to what? Axis x and axis y. तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आपका ऑब्जर्वर क्या हो गया जो पोजीशन को डिफाइन कर रहा है? दैट इज एक्सिस x and axis y. Okay, so with respect to them you are defining the position of the object A, 3, 3. Suppose करिए, if I'll place an object here, this is object B. What is the position of this object B? We'll draw the perpendiculars from both the axes, 6 and here 5. So the position of the object B is nothing but 5, 6. Always you have to write the x coordinate first and then y coordinate, followed by the y coordinate. Okay. So now do you understand how do we define, how do we refer the frame of reference? Frame of reference कैसे बताते हैं हम? किसी ना किसी ऑब्जर्वर के बेसिस पे. तो अभी ए और बी पॉइंट को अगर मैं सिंपली यहाँ पर ए पॉइंट लगा देता और यहाँ पे बी पॉइंट लगा देता, तो आप कैसे बता पाते हैं? अगर आपके पास रेफर करने के लिए ये एक्सेस ही नहीं है, अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ही नहीं है, तो आप उनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख पाते? यू कैन नॉट राइट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ ए एंड बी. यू कैन ओनली डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए एंड बी व्हेन यू हैव सम रेफरेंस
And what was the reference in this case? It was the axis, the x-axis and the y-axis. Okay. This was it. And what we have learned about the point object. What have you learned about the point object? First thing about point object is when the distance the object has traveled, distance traveled is very much greater than its size. Okay, very much greater than its size, then the object is said to be point object. Okay, the example I gave you, this is a biker and a man is sitting on it. Now this bike is 2 meters in length, but an observer is standing here at, let's say, 10 kilometers. So for him, he is observing this motion. So for him, this bike and biker will appear as point object. Why? Because he is simply observing it from a very large distance. Okay. And the second point was that to simplify your deductions and your calculations, or whatever I should say, okay, to simplify the defining of the motion of certain type of complex objects, what you will do, you'll simply put a dot and you will say that assume that this is a anything, maybe a car or a truck or something, any big object which you cannot easily define or easily draw. So उसकी जगह आप एक सिंगल डॉट लगा के बोलेंगे that this is observing or this is performing the same type of motion as of the car or the truck. So you can simply replace the big objects by a small dot. Okay, this is what is all about the point object. Well, yeah. Now here I have some important points for all of you. Points to ponder. These points everyone has to keep in mind, because these are some facts or some theory based pointers from which theory questions are made. Okay, the assertion reason type questions, or you can say the simple direct theory questions are made from these points. So these are very important points from theory questions point of view. Okay, so all of you just read the first point. What does it say? A particle is constrained to move in a straight line and can only change its direction of motion opposite to its original direction of motion. ठीक है? What is the meaning? Very simple meaning. When a particle is constrained to move in a straight line, जब एक पार्टिकल को आपने बांध दिया, एक कंस्ट्रेंट कर दिया कि आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करोगे और आप उसके अलावा कहीं मोशन नहीं कर सकते, तो अगर एक पार्टिकल को आपने कन्फाइन कर दिया कि आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल सकते हो, तो अगर उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हाउ विल दे चेंज डायरेक्शन? स्ट्रेट लाइन में अगर आप कहीं मोशन करोगे तो सिर्फ दो डायरेक्शन होती हैं. ओके, ईदर द फर्स्ट वन इन द डायरेक्शन विच यू आर मूविंग, और द सेकंड डायरेक्शन इज completely opposite, 180 degree turn, and you start moving in the opposite direction. Okay, if I want to define it, it will be somewhat like this. Let me define it for you. Okay, here, if let's say you are on this road, okay, you're traveling in this direction, and suppose this is east. Okay, and I'm saying to you that you are allowed to only travel in straight direction, in straight line path. You cannot travel in a curved path, or you cannot take right, left. You can only move straight. And if I say that you have to only move straight, then how will you change your direction? What is the possible way to change your direction? The only possible way to change your direction is that you move
for some distance towards the east, and then you turn 180 degrees back. You take a sharp back turn, 180 degrees, U-turn types, okay, and then you start moving in the opposite direction. This is, let's say, west. So in straight line motion, the direction change is only possible in this way. Okay, moving on to the next point. Position of a point x is the expression of its accurate location from a pre-chosen reference point called origin. This is what we just discussed. कि आप किसी instead of x we took object A and B. So position of an object A or object B is the expression of its accurate location. आप कैसे बताओगे किसी object की position? आप reference point लोगे, जैसे हमने x और y axis लिया था. Same manner you will take pre-chosen reference points, okay, and based on those reference points you will define the accurate location. Like 3,3 we did for object A, then for object B was 5,6. You remember here just now we did. If I'll take you back, you'll be able to visualize it more clearly. यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ए और बी का हमने एक्यूरेट लोकेशन कैसे डिफाइन किया, बिकॉज हमने प्री चोजन रेफरेंसेस लिए थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड बेस्ड ऑन the points on which the object A was marked, perpendiculars draw करे हमने on both the axis. जिस जहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए वहाँ से perpendiculars draw करेंगे आप both the axis पे, x और y पे, और the perpendiculars will fall on some point, okay, on x axis and y axis, and that point is the location of that object with respect to x axis and y axis. Very simple. अगर मैं बोलूँ B ऑब्जेक्ट की पोजीशन with respect to x axis क्या है, तो आप बोलोगे सर 5. Okay, with respect to y axis क्या है, आप बोलोगे सर 6. That is what it is. चलिए, if position is not changing with respect to the, I'm reading the third point, okay, if position is not changing with respect to the frame of reference, then the object is at rest. Very simple thing. ठीक है, अभी हमने क्या बताया था आपको, that how do you define motion? You define motion with respect to the frame of reference. एक आप frame of reference select करोगे जो observer के साथ attached होगा, and based on that you will define whether the object is in motion or not, whether the object is at rest or not. Okay, so condition वो क्या दे रहे हैं कि अगर object की position frame of reference के respect में change ही नहीं हो रही, observer के respect में अगर position change ही नहीं हो रही, with time it is at the same position, then it simply means that the object is at rest. अगर वो एक ही जगह पे है और वहीं पे रुका हुआ है काफ़ी देर से, तो इसका मतलब ये कि वो कोई मोशन नहीं कर रहा, वो रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है. मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम. सेम बात हो रही है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट से इंटरलिंक्ड है. इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो अगर विथ टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहे तो आप क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अगर नहीं होगी तो object is at rest. Okay, now rest और motion को थोड़ा define कर लें. हम बात करते देर से rest क्या है, motion क्या है, वैसे तो आप सबको पता है, but just to tell you or just to revisit, refresh your memory, I'll tell you what is rest or motion. A body is said to be at rest when there is no change of position with respect to time. अभी जो हमने आपको बताया कि जैसे सपोज करो दिस इज द बस स्टैंड, आप ये बस स्टैंड देख रहे हो ना, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और एक बस आ रही है सामने से, ठीक है. तो अब आप मुझे बताओ बस स्टैंड पर जो दो लोग बैठे हुए हैं, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनका क्या होगा स्टेट ऑफ मोशन, वो रेस्ट पे होंगे या वो कुछ मोशन कर रहे होंगे. जस्ट टू पर्सन्स विच आर सिटिंग एट द बस स्टॉप, ओके, योर सिंपल आंसर विल बी दैट सर दे विल बी एट रेस्ट, ओके, बिकॉज एट every passing with every passing time their position is not changing with respect to each other. With time they are at the same position with respect to each other. That is why they are at rest with respect to each other, है ना. But the question is, are the passengers in the bus at rest or in motion? ये जो passengers बस में हैं, are these passengers in the bus at rest or in motion? Now how will you define this, whether these passengers are at rest or at motion? जो बस के अंदर है, आपने बोला बस स्टॉप पे जितने जो लोग हैं, जो लोग बैठे हैं, they are at rest. But what about these people, these students, okay, who are inside the bus? Let's see. The passengers in the bus
आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, आप एग्जाम्पल लिया था दैट यू आर ड्राइविंग विथ योर फादर, okay, you are sitting on the co-passenger seat and your father is driving. So for you, your father is at rest at all times because his position is not changing with respect to time for you, with respect to you. Okay, similarly इस बस में जितने लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को तो सेम ही जगह पे बैठा हुआ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम बीतता जाएगा उनको अपने साथ में बैठे हुए या अपने सामने बैठे हुए पर्सन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं दिखेगा। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम है ना, the position of the person sitting inside the bus are not changing with respect to each other, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, so they will be at rest relative to each other। but जो है विथ टाइम क्या हो रहा है, बस स्टॉप के बस पास आती जा रही है, ओके है ना, बस जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बस स्टॉप की और पास आ रही है और पास आ रही है दूर से चल के। सो फॉर पैसेंजर्स इन द बस for passengers who are waiting at the bus stop, the passengers which are inside the bus are at motion or they are in motion। क्योंकि विथ टाइम क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। पहले ज़्यादा दूर थे बस में बैठे हुए पैसेंजर्स, नाउ 5 seconds आफ्टर दे हैव कम अ लिटिल बिट क्लोजर, 15 seconds आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन दे हैव कम मोर क्लोजर, देन आफ्टर 30 seconds दे हैव कम एट द बस स्टॉप ओनली। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, टाइम बीत रहा है, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उनकी पोजीशन बस स्टॉप से कम होती जा रही है। तो बस में बैठे हुए पैसेंजर्स है ना, वो मोशन कर रहे हैं किन के रिस्पेक्ट में, जो पैसेंजर्स बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में बस में बैठे हुए पैसेंजर्स जो हैं दे आर इन मोशन। ओके, now what are they saying? Rest and motion are relative terms. There is nothing such as absolute rest. A body can be at rest or in motion with respect to the reference frame। ये जो मैंने आपको इतने बार एग्जांपल दिया, बस वाला भी उससे पहले ड्राइविंग वाला भी, ठीक है, कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ऑब्जर्व के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब समझते हो? एब्सोल्यूट टर्म वो, जैसे अगर मैं कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो एब्सोल्यूट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मेरे लिए रेस्ट पे है तो सबके लिए रेस्ट पे है। ठीक है, अगर मेरे लिए रेस्ट पे है तो सबके लिए रेस्ट पे है, वो होगा एब्सोल्यूट का मतलब। रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मेरे फ्रेंड के लिए हो सकता है मोशन में हो, दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कि आपने पर्सन बदल दिया, ऑब्जर्वर बदल दिया। रिलेटिव का मतलब होता है जहाँ से रेफरेंस ले रहे हो, तो आपने अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो आपका आंसर बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने का, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या मोशन में भी आ जाएगा, है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दैट इज रिलेटिव। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। There is no body or object which is perfectly at rest. Yes, ठीक है, every object or every body is doing some kind of motion. ठीक है, सपोज करिए फॉर यू okay, you and your friend are sitting in a room, so for you your friend is at rest, okay, but no, this is a very complex example, but okay, go with me. But for some alien who is observing us from a different planet, we are not at rest, we are at motion because our earth is revolving, our earth is rotating. Okay, so our position, he can see is rotating. Okay, we cannot feel the rotation of the earth because of the gravitation and every other things, but the other person who is outside our planet, who is outside the earth, he or she or I don't know, an alien, है ना, they can see us rotating, and for them we are not at rest, we are in motion. This is again relative, this is again a very very relative thing, that an object can be at rest or in motion. And to remember, you should remember this, that अगर आपको लग रहा है, आपके फ्रेंड को लग रहा है, 2-3 लोगों को लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रेस्ट पे ही हो। ऐसा बहुत कम होता है that some object is at completely rest or in completely motion. Okay, because you never know, I might change the reference point, I might change the frame of reference, and फिर the object will come in motion. Okay. The third point says a man in a moving train is at rest with respect to a co-passenger, but he is in motion with respect to a man outside the train. यही same example जो मैंने आपको दिया. Okay, so for all the co-passengers inside the train,
their co-passengers are at rest, and for the passengers who are waiting on the platform, okay, and they see a train passing by, so for them the train is in motion, the passengers inside the train are in motion. Okay, now what is distance and displacement? Two very important terms, two very important terminologies of this chapter: distance and displacement. So what do you understand by distance, or what do you understand by displacement? You must have come across these terms in your previous classes as well. You might have studied them. So how do you define distance, and how do you define a displacement? Okay, yeah, very well. You can read this here as well. Distance covered by a body is the total length of the actual path covered in traveling from initial to final position. Distance को आप कैसे define करते हैं? The total length, the total path length covered in traveling from the initial position to the final position. Distance is a scalar quantity. Now what is scalar and what is vector? We will discuss this in a brief. Okay, the majorly this scalar vector thing will come in your next chapter, but I will give you a brief in this chapter. Now what is displacement? The displacement is defined as the shortest path between two positions, initial points and final point. Two positions, well, 2 points. So shortest distance, your shortest path possible between 2 points A and B, initial and final position, is the displacement, and displacement is a vector quantity. Now, okay, hello, 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 yes, hello, hello, okay, bye. Yeah, so I was telling you about distance and displacement, and I told you that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Despite the fact that distance is the total path length. अच्छा, you can see this in the diagram. You can see the diagram below. Point A और B दिख रहा है आपको नीचे वाले diagram में. You see point A से B जाने के there are two ways possible. Okay, in going from point A to B. In going from point A to B, the first possible way is the dotted line which I have shown. Okay, this is the first possible way. The second possible way is the straight line, black line straight, which I have shown. Now, if I am traveling from first path, okay, the dotted line, then the distance will be what? The total path length of this path, this curved path. But what will be the displacement? The displacement will be this. Let's suppose this curved path length is of let's say 10 kilometers, and the straight line is of 5 kilometers in length. Okay. Now, if I'm traveling from A to B through path 1, what will be my distance? My distance will be 10 kilometers. I'm traveling from A to B through path 1. So my distance will be 10 kilometers, but what will my displacement? Yes, correct, 5 kilometers. Why 5 kilometers? Because the shortest possible distance. Displacement is what? The shortest path possible between two positions. And the shortest path, you all know, between 2 points is a straight line joining them. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? उनको ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन. ओके, सो डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स. वाई? बिकॉज डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेते हैं, टोटल पाथ लेंथ लेते हैं, जितना डिस्टेंस हमने टोटल चला. बट डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? DISP डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ विच इज 5 किलोमीटर्स. सो शॉर्टेस्ट लेंथ हम लेते हैं. ठीक है, इसी का एग्जाम्पल आप देखो नेक्स्ट फिगर में. इसी का एग्जाम्पल है अगेन. ये देखो, द सपोज करो दिस इज योर स्कूल.
this area, this is your school, and this is your home. Okay, now if I say that the if I say that the shortest possible path, okay, in going from school to home is a straight line which is of 10 kilometers. This is the shortest path possible in going from your in returning from home from your school. Okay, returning to home from your school. The shortest possible path is 10 kilometers. But what you cover another distance, another let's you take another path, okay, which is of, let's say, this path. This is another path of coming back to your home from your school, and this is of 25 kilometers. This is of 25 kilometers. Okay, so if I'm taking the path 1, which is the straight line, what will be my distance? If I'm coming back from school to home from path 1, my distance will be 10 kilometers, and my displacement will also be 10 kilometers, because I've chosen the shortest path possible for coming back to home. Okay, if I travel by path 1, this is for path 1. What if I travel from path number 2? If I travel from path number 2, my distance covered will be 25 kilometers, but my displacement in the case 2 as well will be 10 kilometers, because displacement is the shortest distance between point A and point B, and the shortest distance still is 10 kilometers. Okay, so from this analysis, what do you what observation you have made? That distance is either greater than or equal to distance is either greater than or equal to the displacement, or we can say displacement is smaller or equal to distance. So this is a very important observation, or फैक्ट आई शुड से विच यू शुड रिमेंबर कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा. डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. डिस्प्लेसमेंट के बराबर किस केस में होगा? जब आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से ट्रैवल करेंगे तो उस केस में जो है आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा. बट इन ऑल दी अदर केसेस द डिस्टेंस विल बी ग्रेटर दैन द डिस्प्लेसमेंट you have undergone. Okay, about scalar and vector quantities, I'll give you a brief. I said distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity, right? ये मैंने आपको बताया था. So what is scalar and what is vector? Scalar quantities are those quantities, okay, which have magnitude in them as well as direction. Not direction, only magnitude. But vector quantities are those which have magnitude in them as well as a direction associated with them. Here no direction. In scalar there is no direction associated. So if you say suppose I'll give an example. Velocity is an example of vector quantity, whereas speed is scalar quantity. Now what is the difference between them? When I say speed, I only define my speed. If I say that I'm moving with a speed of 70 km per hour. Now what is 70 kilometers? 70 kilometers is the magnitude. This 70 kilometers is the magnitude. Okay, but if I say that I am moving with 70 kilometers towards east, now I'm defining velocity. Velocity has both magnitude as well as a direction. So the magnitude is 70 kilometers and the direction will be east. What? Because
Speed only has magnitude, 70 kilometer per hour, 70 kilometer per hour, whereas velocity will be having both magnitude as well as direction. 70 kilometer per hour towards what? Towards east. Whenever you associate a direction with some magnitude, so then the physical quantity becomes vector. ऐसी physical quantities जिनके साथ में आप एक direction associate कर देते हो, आप ये बता देते हो that this you are moving in which direction. Okay, so then you are defining your velocity. ऐसी physical quantities with which the direction is associated, while defining them you always define in which direction they are uh, you know in which direction they are held, or in which direction they are taking place. So that all those type of physical quantities are vectors, whereas scalar quantities are those where where there's no need to define the direction associated with the physical quantity. Suppose the length. Okay, if you have to define the length of some object, you won't say that the length of a car is 2 meter towards east. No, you never define like that. What do you say? You simply say the length of the car is 2 meters. Okay, so those physical quantities which don't need a direction or not to get completely defined, those are scalar quantities, whereas the physical quantities which are needing a direction with them to specify them or to define them completely are vector quantities. In a very very brief manner, we'll discuss this in the next chapter. Definitely is this topic is mainly for the next chapter, but to give you a just a brief is this. Okay, if you now, based on this, if I want to ask you some questions, okay, I'll just give you a question based on this. Very simple question. The question is, you have to tell me the ratio between distance and displacement. Your options are always equal to 1, less than 1, equal to or less than 1, and the D part, equal to or greater than 1. Very very simple question based on the analysis of distance and displacement. You can easily tell its answer. The answer is D only, because what I told you distance is greater than or equal to displacement. So the ratio will always come out either the ratio will be equal to 1 in the case when the distance and displacement are equal, then the ratio will be 1, and if the distance is greater, then the ratio will be greater than 1. Simple. So equal to or greater than 1 will be the correct answer. Okay, so we covered a basic gist of topics today. We covered about starting with what is kinematics, what is dynamics, now what is frame of reference, what is a point object. Okay, then coming to some important points about how do you define absolute rest or absolute motion, then coming to distance and displacement and scalar and vector. So a lot of topics have been discussed in today's class. In the next class we will
do some questions. We'll practice some questions from today's topics. Okay, and we'll learn further more topics. Okay.